So we are going to start with private defense, that is section 96 to 106 of IPC and 34 to 44 of BNS. So now we have to first of all start with the why, the philosophy, or you can say the policy or the why of private defense. Now if you see private, और ये क्या लिखा है सेकेंड वर्ड, डिफेंस. आपको डिफेंस, और अगर आप सेक्शन 96 देखें तो वहां क्या लिखा है, राइट. आपका किस चीज का राइट, अधिकार है, राइट है किस चीज का, डिफेंस का, ऑफेंस का नहीं. डिफेंड करने का राइट है, ऑफेंस करने का राइट नहीं है. डिफेंड करने का राइट है, पनिश करने का राइट नहीं है. पनिश करने का राइट किसका है, स्टेट का है. सरकार करेगी, स्टेट करेगा पनिश, आप सिर्फ डिफेंड कर सकते हो. वैसे तो हर एक पर्सन, हर एक सिटीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, इजंट इट? हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है, स्टेट्स ड्यूटी. क्या ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन. To protect the citizen. It is the duty of the state to take care of the citizen, to take care that they all are living with, liberty and dignity, right? Not under any kind of fear. But कितना भी developed country क्यों ना हो, कितना भी developed nation क्यों ना हो, किसी भी country, किसी भी state के resources इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो क्या करें, कि each and every person gets protection all the time. Are you understanding? Each and every person cannot be protected all the time. Each and every person cannot be, उसका जो limb है, उसका जो body है, उसका जो property है, उसका जो life है, cannot be protected by the state at each and every time. That is why this right of private defense, एक राइट ऑफ डिफेंस हम कह सकते हैं, एक डिफेंस का राइट दिया गया है हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट एन इंडिविजुअल टू बी अ कावर्ड. वी डोंट एक्सपेक्ट एन इंडिविजुअल टू फ्लाई अवे इन केस ही फेसेस एनी काइंड ऑफ इमिनेंट, आई एम यूजिंग द टर्म इमिनेंट, इमिनेंट पेरिल, इमिनेंट डेंजर. In that case, if he does not have time to take recourse to public authorities, the restrictions with respect to defense are given under section 99 IPC. अगर उसके पास टाइम नहीं है to take recourse to public authorities, in that case he can defend his own body, he can defend his own property, he can also defend others' body and others' property. Others' property. Did you understand? This is different from English law. Indian law में हम हर एक पर्सन को डिफेंस का राइट देते हैं कि वो अपनी बॉडी, वो अपनी प्रॉपर्टी, औरों की प्रॉपर्टी और औरों की बॉडी को प्रोटेक्ट करें. एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड, because this is human right. This is right to life. This is right to live with dignity, isn't it? Ki, every person has a right to live with dignity. Every person has a right to, right to, we can say, कि उसको हम एक कावर्ड और कमजोर नहीं बना सकते. हम उसको एक कावर्ड और एक कमजोर नहीं बना सकते. इसलिए हमने एक ही ऐसा राइट है जो हमने हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन इज आर्म्ड विद दिस राइट, एवरी पर्सन इज आर्म्ड विद दिस राइट ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज ओन बॉडी, अदर्स प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी एंड अदर्स प्रॉपर्टी. ऑलराइट, ठीक है. नाउ ऑल्सो इफ वी सी कि ये जो डिफेंस का राइट है, ये डिफेंसिव राइट है. कैन आई से दिस इज अ डिफेंसिव राइट? व्हाट इज दिस? Defensive right, not an offensive right. This defensive right is also constitutionally sanctioned. Why? Because this is based on reasonableness. ये reasonableness का मतलब क्या हुआ? What do you mean by reasonable?
कि आप जो एक डिफेंड करने का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो वो आप रीजनेबल फोर्स यूज करके एक्सरसाइज करोगे. सेक्शन 99 पैरा 4. Section 99 para 4. So this is a reasonable right. This is a right which is just, with equity and good conscience. Right? And these are all part of natural human rights. So basically, you know, जैसे मैं आपको बता रही थी कि state cannot be everywhere at every time. Therefore, this defensive right has been given to every individual so that he can exercise this right to defend himself and also others. अब देखो बेटा यहाँ पे English law जो है it is different. English law कहता है कि आपका जो right of private defense है ना, it is only to the extent of protecting your own body, protecting your own property, and the body and property of your relatives with whom you are related, not strangers. Like in India, you can also protect the body and property of the strangers, na? Right? But what is the why? हम औरों की अगर किसी और के घर पे चोरी हो रही है, किसी और के घर पे डकैती हो रही है, तो उस केस में भी मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. Why? Why? Because we also believe in social adherence. Social adherence. What do you mean by social adherence? कि हम लोग जो है ना as individuals एक सोसाइटी में कैसे रह सकें with cooperation. You know, all right? So that the society can live together and they are all bind होकर जी रहे हैं. ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर कर रह रहे हैं. So even if somebody else's body, somebody else's property is at peril, we still have a right to protect his body and property, provided it qualifies all the restrictions of Section 99. Provided it qualifies all the. अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. We are sticking to only the private defense. क्यों हमारे पास इंडियन पिनल कोड और बीएनएस में पूरा का पूरा एक टॉपिक है. हम क्यों इतना इंपॉर्टेंट पूरा सेक्शन 96 टू 106 क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेट के रिसोर्सेज इतने वास्ट नहीं हो सकते कि वो हर एक पर्सन को हर एक टाइम पे प्रोटेक्ट करे. इसलिए हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर आईपीसी में जो है इंक्लूड किया है, ताकि हम हर एक सिटीजन को, हर एक पर्सन को, नॉट ओनली सिटीजन, even if he is a non-citizen, he has a right to defend his body, property, others' body and property. Why? Because this is a natural human right. It is based on principles of reasonableness. It is based on the principle of equity, good conscience, and justice. And we are also being given a right to protect others' body and property because we believe in social adherence. Did you understand the policy? And also, third why of having the right of private defense is that we can also deter the aggressor. Deterrence to aggressor. Aggressor को कभी भी right of private defense नहीं मिलता. Who is an aggressor? Who is an aggressor? The person who initiates the transaction. Right? ठीक है ना? All right. अगर आप किसी के घर में चोरी करने गए हैं और आप ही को क्या होता है? You know, the owner of the house attacks on you. In that case, if you retaliate and probably kill that owner, you cannot seek the right of private defense. Especially, मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, जब भी एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए to find out who is the aggressor. Sometimes it might happen that the aggressor is only seeking the right of private defense. The aggressor is only seeking the right of private defense. In that case, it's a big no. Aggressor cannot seek the right of private defense. All right? And the why is we have to also deter the aggressor. Aggressor को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई पुलिस स्टेशन तो बहुत दूर है, पुलिस तो पहुंचेगी नहीं, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा. उसको पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के पास जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू कॉजिंग डेथ्स. Section 100 is the only section
and also section 103 IPC is the only, there are these two sections which gives a person the right to cause death. चाहे वो intentional death है, intentional causation of death है, चाहे आपका वो with knowledge cause of death है, चाहे with वो reason to believe, because वहां पे word use किया है voluntarily. Intentional भी है, intentional, intention, ठीक है ना? So when we are going to read these provisions, we are going to see that the causation of death can be either of it, but it has to be, even section 100 is subject to section 99. 99 हम कहते हैं एक ऐसा सेक्शन है आईपीसी का जो कि कंट्रोल करता है पूरे का पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को. सो अगर हम सेक्शंस की बात करें, एंड अच्छा बिफोर आई गो टू द सेक्शंस, द लास्ट principle or the last policy is it is based on Bentham's principle. What is the principle that Bentham has given us? He says that law, it is the principle of law that the law should maximize the pleasure and minimize the pain in the society. Law ka kaam kya hai? To give maximum pleasure to the society, to the people in the society, and minimize the pain. Same principles ke based pe right of private defense bhi based hai. So the principle is that the right of private defense is based on it is a manifestation of the principle that the purpose of law is to increase the pleasure and reduce the pain. Anybody who knows one name for this principle? Yes? Utilitarian theory. Yes. And also there's one more word. Yes. Hedonism. ठीक है? So it is based on these principles. Right of private defense is based on these principles. So we have given it the constitutional provisions. Can you give me some constitutional provisions from which we can take the source of right of private defense? Article 21. Right to life and personal liberty. Right, everybody has a right to life and personal liberty, na, right? Okay? And social adherence, deterrence to the aggressor, and the principle given by the Bentham to increase the pleasure and reduce the pain. Now, if you look into if we talk about, the provisions with respect to your right of private defense, so section 96 जो है ना, it is just a declaratory section. ये declare कर रहा है. Declaratory section क्या डिक्लेयर कर रहा है कि हर एक पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है 97 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा. वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स अप टू बॉडी एंड ऑल्सो टू द प्रॉपर्टी. इसको हम पूरा एक डिटेल में समझेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ. सेक्शन 90 आगे जो है वो बात करता है किसके बारे में, कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू दोज केसेस विच आर एक्चुअली नॉट ऑफेंसेस, लाइक an act done by an unsound mind person, it is not an offense. An act done by a child, it is not an offense. So right of private defense, देखो बेटा, जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो तो आप वो जो आपका राइट है वो आप कब एक्सरसाइज करते हो? जब कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है ना, या फिर एक एप्रीहेंशन ऑफ कमिटिंग और डूइंग, देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है. बट अगर एक एक्ट ऑफेंस ही नहीं है, क्या फिर भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? कर सकते हो. अगर सेक्शन 98 नहीं होता तो फिर जो एक्ट्स ऑलरेडी इम्यून्ड है, किनके इम्यून्ड है एक्ट्स? एक अनसाउंड माइंड पर्सन का, एक चाइल्ड हु इज बिलो 7 years ऑफ एज, एक चाइल्ड जो 12 years तक के एज का है, 7 to 12, but he is of an immature understanding. In intoxicated people, in those cases also you can extend the right of private defense, even mistake of fact for that point of, mistake of fact also.
तो वो सेक्शन 98 में हम क्या बात करते हैं, दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस is also available in cases of acts which are not offenses due to intoxication. 85 86 इंटॉक्सिकेशन हो गया बेटा. फिर उसके बाद चाइल्ड डोली इनकम एक्ट्स, ठीक है, डोली इनकम एक्ट्स सेक्शन 82 एंड 83. फिर अनसाउंड माइंड 84, अनसाउंड माइंड 84. सो कैन यू सी अभी तक हमने क्या बात की है, हमने सिर्फ बात की है प्रिंसिपल्स की. सेक्शन 96 ने डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन है. 97 दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो किसके लिए अवेलेबल है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है. बट कौन से केसेस में वी विल अंडरस्टैंड द व्हाई आल्सो. वी हैव सी बेटा, जब भी हम एक डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब भी हम प्लीड करेंगे कोर्ट में एज अ डिफेंस, वी शुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि किन केसेस में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्लीड कर सकते हैं. हर एक केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते हो. तो किन केसेस में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब सेक्शन 97 क्या है, इट इज द स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. स्कोप क्या है, व्हाट इज द एरिया, कहां पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, सेक्शन 97, ठीक है. एंड जो सेक्शन 99 है दैट इज द कंट्रोलिंग सेक्शन. सेक्शन 99 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस है. आप कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जब भी आप डिस्कस करेंगे, यू विल डेफिनेटली टॉक अबाउट सेक्शन 99. सेक्शन 99 में आपके सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्शंस? Whenever a person has a right of private defense, he is subject to section 99. He is subject to section 99. If only he qualifies the restrictions given under 99, only then he can rightfully claim the right of private defense. Are you understanding? So restrictions. So this section 99 is a controlling section. It controls all the provisions of right of private defense. आप कभी भी कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 100 पढ़ेंगे, section 103 पढ़ेंगे, they are all subject to section 99. Did you understand till here? And then from section 100, अब हम 100 onwards, right of private defense जो है, it has been split into two parts. Section 100, 101, 102. They are dealing with right of private defense of body. And 103, 104, 105, and 106. 106 is a general section, ठीक है. All right, but 105 तक जो है they are dealing with property, right of private defense with respect to property. ये body के आपके 3 sections हैं और property, but ये सारे sections they are controlled by whom? They are all subject to. This is also read with 99. Do not forget 99. This is also read with 99. 106 can be an independent section. 106 can be an independent section, but very important. In recent years, you will see, especially जो 106 की illustration है, that has been asked a lot many times. Did you follow the framework of section 96 to 106? So 96 is a declaratory section. 97 divides into two parts that right of private defense is available with respect to body and property. Section 98, again, it is extending the right of private defense even in those cases where the acts are not offenses by virtue of so and so reasons. 99 restrictions, and then we have 100 से लेके 106. So now we look into the Bare Act and we understand. All right, now let's start with the provisions. Please look into section 96. Things done in private defense. बिल्कुल verbatim 34 BNS है. Okay? All right, exactly the same. Nothing is an offense. See, पहले तो marginal heading देखो. Things done in private defense. कुछ भी, things, कुछ भी, anything. Act नहीं लिखा है, इसने scope बड़ा कर दिया, बहुत wide कर दिया scope, thing word use करके.
done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. So what is it saying? Is this section giving you anything? वो सिर्फ बोल रहा है कि कुछ भी आपने किया है अगर, बट वो आपने कब किया है? इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एक एक को आप सेपरेट करके पढ़े तो वो जो है इट इज नॉट एन ऑफेंस. राइट एक्सरसाइज्ड. कौन सा राइट? प्राइवेट डिफेंस. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एनीथिंग डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एन ऑफेंस. सो बेसिकली 96 क्या कर रहा है? एक सिंपल सा जनरल रूल दे रहा है कि ये जो सेक्शन है इसके जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली क्या डिनोट कर रहे हैं बेटा. इफ यू जस्ट ब्रेक दिस, ये 3 वर्ड्स को जो मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा है वो क्या कह रहा है कि ये आपका एक राइट है, अधिकार है. हर एक पर्सन का अधिकार है, राइट है. ये किस चीज का राइट है? किस चीज का राइट है? कि वो अपने आप को या फिर किसी और को या अपनी प्रॉपर्टी को या फिर किसी और की प्रॉपर्टी को. ये कहां दिया है? बॉडी प्रॉपर्टी. ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली सेक्शन 97 में दिया है. बट ये सेक्शन 96 सिंपली एक डेक्लरेटरी सेक्शन है जो कि कहता है कि हर एक पर्सन के पास स्टेट ने एक राइट दे दिया है. एवरी पर्सन हैज बीन आर्म्ड विथ. आपको हथियार नहीं दिए बट हथियार की जगह क्या दे दिया है? एक हथियार जिसको हम कहेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ वेपन. इट इज जस्ट लाइक अ वेपन दैट एवरी इंडिविजुअल इज लोडेड और इज आर्म्ड विथ. क्या? he can defend, he can exercise this right of private defense. So यहाँ पे defense का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे if we see a lot of judgments, a lot of cases where the Honorable Supreme Court, Honorable High Courts have repeatedly stated that यहाँ पे जो आपको state ने section 96 के अंदर right दिया है वो एक retributive right नहीं है. It is not a retributive right. It is not a right of aggression. आगे वाले ने सिर्फ आपको क्या किया? एक चांटा दिखाया और आप तो तलवार लेकर चले गए. You can't expect, you 94 was not, right of private defense is not available. ठीक है? तो it is not a right of retribution. It is now not a right of aggression. It is not even a right of revenge. Revenge का भी right नहीं है क्योंकि ये सब काम किसने करने हैं? ये सब किसका अधिकार है करने का? Retribution, aggression, revenge, state. If somebody needs to be punished, this is also not a right to punish. आपको punish का भी right नहीं दिया है यहाँ पर. This is not a right to punish. This is also not a right. You don't have a right to. मेरे घर पे कोई आके मुझे धमका कर चला गया कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम कल जब सुबह घर से निकलोगे ना तो तुम देखना, तुम I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow morning. Tomorrow morning when you leave for office, then you see what I do. And what I do is I quickly call up my gundas, I call up my people and I say चलो जी चलो उसकी पिटाई करने चलो. क्या मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस टाइम पे क्लेम कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डिफेंसिव राइट है. इस चीज को हमेशा याद रखना. इट इज जस्ट अ डिफेंसिव राइट. It is not a right of it is not a right of retribution. It is not a right of aggression. ठीक है? It is not even a right of retaliation. आप retaliate नहीं कर सकते हो. ठीक है ना? Retaliation during time of, if he is your enemy or during war times also, वो सारा काम किसका है? So basically defensive right है. जितने भी मैंने आपको ये restrictions बताई है ना, ये सारा section 99 में दिया हुआ. So अब and now डिफेंड का राइट है, बट डिफेंड का राइट का मतलब क्या हुआ? आप डिफेंड करो, बट वहां पे कोई एक ऐसा टेस्ट या फिर कोई ऐसा एक रूल है जहां पे हमें बताया जाए कि कितना डिफेंसिव राइट हम यूज कर सकते हैं. देयर इज नो गोल्डन स्केल टू वे दैट व्हाट इज द अप्रोप्रिएट और ऑप्टिमम फोर्स.
It will depend upon the facts and circumstances of the case. But yes, if the danger is so imminent, now that is another very important thing. अगर आपका जो danger है with which you are faced, if it is an imminent danger, if it is an imminent peril, in that case, we do not expect the victim, or we do not expect the person, not the victim, we do not expect the accused to weigh in a golden scale कि कितना right of private defense उसको exercise करना है. Are you understanding? हम उस टाइम पे देखो बेटा, अगर कोई अग्रेसर आकर आपके ऊपर अटैक करता है, तो जो अक्यूज्ड पर्सन है, हम उससे ये एक्सपेक्ट थोड़ी ना करते हैं कि वो एक्चुअली क्या करे, नापे तोले और कैलकुलेट करे कि उसको कितना डिफेंस यूज करना है. ठीक है? सो बेसिकली इट इज सर्कमस्टांशियल. It is circumstantial. But 96 is simply one sentence section, which is a declaratory section, which is giving every individual. It is just declaring that every individual has a right of private defense. That is it. Is everybody clear on 96? Okay. Now if we go to 97. Now section 97 says what, beta? Section 97 ना दो parts में divide करता है. आप एक बार ये screen पर देख लो, फिर I will read and it will become easier for you to understand. Now section 97 क्या बोलता है कि right of private defense जो section 96 हर एक individual को दे रहा है, वो right of private defense का scope क्या है? वो scope ये है, देखो बेटा IPC में offenses तो बहुत तरीके के हैं ना, क्या सिर्फ दो heads की offenses हैं? Offenses against property and offenses against human body, क्या यही दो offenses हैं या इसके अलावा भी offenses हैं? इसके अलावा भी है ना बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, राइट? बट क्या हर एक, अब जैसे कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी भी तो एक ऑफेंस है ना, ऑफेंस है कि नहीं है? 120A आईपीसी टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी. क्या आप कॉन्स्पिरेसी के केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? यस, इमिनेंट डेंजर. क्यों? और सेकंड रीजन क्या है कि वो सेक्शन 97 में कवर्ड नहीं है. तो 97 जो है ना, वो हमें स्कोप बता रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का. अब वो क्या बता रहा है कि जितना भी एक पर्सन के पास एक राइट है, डिफेंसिव राइट, वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब देयर इज एन ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी. सेकेंडली वो आगे क्या बताता है, कोई भी एक ऑफेंस, if a person is faced with imminent danger to his body, if a person is faced with imminent danger to somebody else's body, he can exercise right of private defense. इसमें वो पूरा का पूरा chapter 16 cover हो रहा है. Chapter 16 for IPC and I think chapter 6 is BNS. Okay? All right? So chapter 16 IPC and chapter 6 BNS के अंदर जितने भी offenses है ना बेटा, उन सारे ऑफेंसेस के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. बट यहां पे सारे प्रॉपर्टी के हम ऑफेंसेस को कवर नहीं करेंगे. हम सिर्फ कितने ऑफेंसेस को कवर करेंगे बेटा? हम सिर्फ, देखो बेटा, अंडरस्टैंड कि offenses against property, they are covered under chapter 17 and even chapter 17 IPC and 17 BNS also. All right, ठीक है? But property के cases में सारे के सारे offenses जो chapter 17 में दिए ना, जो पूरा chapter 17 में आप देखो बेटा कौन से offenses दिए हो सकते हैं? Theft, robbery, extortion, criminal breach of trust, criminal misappropriation of property, ठीक है, and so on. But आपका जो part 2 है of section 97, वो कहता है कि offenses against property के cases में हर एक offense जो कि property से related है, उसमें right of private defense available नहीं है. Right of private defense is only available in cases of offenses against property related to theft, related to robbery, related to mischief, related to criminal trespass.
एंड रॉबरी के साथ हम डिकॉइटी भी लेंगे बिकॉज सिर्फ नंबर्स का फर्क है ना, 5 से ज्यादा होंगे तो रॉबरी डिकॉइटी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑफेंसेस ले रहे हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ थेफ्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द offense of robbery, dacoity, mischief, criminal trespass, and also the fifth category, that is the attempt of all the above offenses. Attempt, you understand? Failed act. Attempt of all the above offenses. Attempt. What do you mean by attempt? When a person commits an act, जब एक पर्सन एक्ट कमिट करता है, अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाए तो वो ऑफेंस माना जाएगा, और अगर वो अनसक्सेसफुल है, in that case it is an attempt, right? Attempt. अनसक्सेसफुल है तो अटेम्प्ट, सक्सेसफुल है तो ऑफेंस, उसको हम कहते हैं अटेम्प्ट. So attempt to theft, attempt to robbery, attempt to mischief, attempt to criminal trespass also. अब यहाँ extortion भी नहीं है. If a person is committing extortion, you cannot exercise right of private defense. If a person is committing criminal breach of trust, you can't exercise right of private defense. Why? See beta, right of private defense against body में तो imminent danger है ही है. Murder, culpable homicide, right? In some cases में क्या है? There is imminent danger. Imminent you understand? Instant closeness, close, बिल्कुल close danger है. But in cases of offenses against property like extortion, like criminal breach of trust, like criminal misappropriation of property, the danger is not imminent. There is time to take recourse to public authorities. And if there is time to take recourse to public authorities, in that case, you cannot exercise right of private defense because it is just a defensive right. यहाँ पे आपको एक जो state है ना, वो आपको एक right offense करने का नहीं दे रहा है. Did you understand? Did you understand? Now please look into section 97. It says, every person has a right. Please underline the term right. अधिकार है ये आपका. It is a right that every person has. Underline this term right. Subject to the restrictions contained in 99, 37 of BNS, 99 of IPC. ठीक है? 99 is a controlling section. It will control first his own body. Underline own body. And the body of any other person against an offense, against any offense affecting human body. Offenses against human body, chapter 16 IPC and chapter 6 BNS. जितने offenses इन chapters के अंदर fall कर रहे हैं, उन सब offenses के लिए आपके पास right of private defense है. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person, against any act which is an offense falling under the definition of, see यहाँ पे legislature ने ऐसे नहीं लिखा है the property whether movable or immovable, you know, या फिर the property against any offenses falling under offenses against property. Are you understanding? See, the legislature could have written every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend the property of others and his own falling under offenses against property. ऐसे नहीं लिखा है ना, तो यहाँ क्या लिखा है? It is stating against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. So it is only limited to offenses against property, limited to theft, robbery, dacoity, mischief, criminal trespass, and their attempts. Did you understand the scope of right of private defense? Yes. और जब आप यहाँ पे अगर आपने ये चार्ट बनाया है, वेरी गुड, अगर बनाया है तो यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो. What you can add here is body में own
अदर्स बॉडी, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रॉपर्टी में भी ओन एंड अदर्स प्रॉपर्टी. Now we go to section 98, right of private defense against an act of a person of unsound mind, etc. When an act is not that offense, please see how I'm reading. I left comma to comma. When an act is not that offense by reason of youth, 82, 83. No, want of maturity, of understanding. So this is yes, 83. The unsoundness of mind, 84. Intoxication of the person, 85, 86. Doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person. Misconception on the part of that person, 76, 76, 79. Mistake of fact. Okay? Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. जैसे हमने वो R versus Levitt का केस किया था बेटा. If the girl who was hiding behind the curtain, she was actually not a burglar, but she was the friend of the servant ना. But जब ओनर जागता है, उसको लगता है कि it is in the middle of the night, the curtains are moving, पक्का से कोई burglar घर के अंदर आ गया. So under misconception of fact, he thinks that the lady is a burglar and he attacks on the lady. Now when he attacks on the lady, in that case, the lady can still exercise the right of private defense. Are you understanding? He can still exercise the right of private defense, but वहां पे जब आप exercise कर रहे हो, it is subject to section 99 IPC. Optimum force, reasonable force. ठीक है? All right. So 96, 98 is nothing. It is just an extension of this right of private defense. ये भी scope ही है ना. 97 ने scope दिया है ना. 98 भी scope दे रहा है. वो कह रहा है वो 97 जो है वो बता रहा है कि किन subject matter के ऊपर right of private defense मिलेगा. और 98 बता रहा है किन लोगों के against right of private defense मिलेगा. तो right of private defense जो है 98 कहता है कि उन लोगों के against भी आपके पास available है. ऐसे लोग जिनके acts offense नहीं माने जाते हैं. ऐसे लोग जिनके एक्ट्स ऑफेंस नहीं माने जाते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड 98 आल्सो? एंड आल्सो you must read these illustrations, illustration A and B. All right. Under English law, the right of private defense is not available in cases of strangers. In cases of strangers, body and property. इस पे हमारा जो केस है, that is Reg versus Rose, 1884. In this case, there was this father, this father was killed by his own child. उसके बच्चे ने ही अपने father को जो है, he killed his own father. But the child pleaded right of private defense. He was made liable for homicide, but he pleaded right of private defense with respect to that his father was an aggressor towards his mother. And in order to save his mother's life, he acted in defense to his mother and killed his father. तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको right of private defense grant कर दिया था. ठीक है? All right? Because of the relation. But in case of strangers, English law में right of private defense available नहीं है. Am I clear on this? ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या आता है ना, कुछ आपको कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो दे आल्सो आस्क यू टू एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू इंग्लिश लॉ. ठीक है, सो दिस इज द एरिया वेयर वी डिफर विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लॉ. ऑलराइट, अच्छा, ऑलराइट, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. 98 में जाने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इसमें ओनर्स है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, वो किसके ऊपर है प्रूव करने का? अक्यूज्ड. बट इन केस, बिकॉज अक्यूज्ड, see, we know what law is. It's not every time that, every citizen or every person or every accused would know कि एक right of private defense available है. मेरे से खून हो गया, पर मुझे नहीं पता कि वो डिफेंस में हुआ है ना. आप समझ रहे हैं? और ना ही आपके वकील को पता है, वकील ने भी नहीं उसको उस प्ली को रेस किया. ठीक है, तो बट जब प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट में
और प्रोसीडिंग्स में जब सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आते हैं, जब एविडेंसेस कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट को सामने क्या पता चलता है कोर्ट को कि जो अक्यूज्ड है उसने जो एक्ट किया है वो कैसे एक्ट किया है, इन डिफेंस एक्ट किया है, बट द डिफेंस इज नॉट बीन टेकन एज अ प्ली. The right of private defense is not taken as a plea by the accused person. In that case, क्या कोर्ट suo moto ये right of private defense का plea raise कर सकता है? Absolutely yes. Are you understanding? If the plea of right of private because it is a natural human right, na? It is a natural human right. So if the plea is not being raised by the accused, in that case, court suo moto can also raise. ये मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने आपको केस लिखवाया था, उसी के अंदर आप प्लीज ये लिख लीजिए, मुंशीराम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968. So can we conclude that ऐसे वापस 2000 मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे केसेस हैं where the Supreme Court has stated that we just cannot deny the right of private defense to a person just because he has not taken the plea. If he has not taken the plea, he is still entitled to right of private defense. Now we come to section 99, which is the controlling and very, very important section. Section 99 talks about the restrictions. You can give the heading. It's a very simple section. Okay? Can I just brief you on 99 quickly? Then we can just read it. Okay? So section 99 जो है ना, वो आपको क्या बता रहा है कि ठीक है, आपके पास सेक्शन 96 ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे दिया है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बट ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है. इट इज नॉट अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी, एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, एक इम्यूनिटी नहीं, एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप जितना जो चाहे करें, and plead the right of private defense and claim a complete immunity in cases of those acts where though you have committed in self-defense, but the required amount of force which was required, you have exceeded. In those cases, the right of private defense is not available. So there has to be some limitations to it. The right of private defense is not absolute. It comes with limitations. The limitations are given under section 99. All right. अब ये limitations क्या हो सकती हैं? देखो बेटा, सबसे पहला तो we are all state subject and इसलिए state की responsibility बनती है हम सबकी देखभाल करना. तो इसलिए अगर हमारे पास time है to take recourse to public authorities, we must do so. We must do so. Though it is para 4 of 99, but I'm taking it as a first point. क्योंकि जब भी हम एक circumstantial या फिर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में जब हम सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो हम देखेंगे, जब भी हम इवैल्यूएट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, वो कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है. आप 99 को भी पढ़ो मत, सिर्फ इस तरीके से समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. एक पर्सन ने, ए ने एक एक्ट किया है, बट वो एक्ट क्यों किया है? वो एक एक्ट ऐसा है जो कि एक ऑफेंस है, बट इसने ये एक्ट क्यों किया? व्हाई डिड ही डू दिस एक्ट? क्यों? क्योंकि बी ने उसको अटैक किया, तो इसने सेल्फ डिफेंस में ये एक्ट किया, इसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया. अभी जब ये सेल्फ डिफेंस कोर्ट में एज अ डिफेंस क्लेम करेगा या फिर एज डिफेंस प्लीड करेगा, उस केस में वो सबसे पहले हमें क्या देखना है बेटा? हमने देखना है कि जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, सबसे पहला तो क्या ए इंटाइटल्ड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए? इजंट इट? हम सबसे पहले देखेंगे, इज ही इंटाइटल्ड? इज ही इंटाइटल्ड? फिर हम क्या देखेंगे? ओके, इफ ही इज इंटाइटल्ड, did he exercise the right of private defense within the time? मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने अपना जो एक्ट किया है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होने से पहले ही कर चुके हो, जो कि एक ऑफेंस है, या फिर जो आपने एक एक्ट किया है
वो कब किया है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होने के बाद. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेकंड आप क्या एग्जामिन करोगे? व्हेन विल द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट एंड व्हेन इट विल एंड. ये क्यों एग्जामिन कर रहे हैं हम? क्योंकि जो ऑफेंस है ना, शुड बी कमिटेड कब? इन बिटवीन दिस टाइम फ्रेम. इस टाइम फ्रेम के अंदर कमिट होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. फिर हम तीसरी चीज का एग्जामिन करेंगे बेटा. वॉज देयर टाइम टू टेक recourse to public authority? Yes. नेक्स्ट क्या एग्जामिन करेंगे? नेक्स्ट, फोर्स कितना यूज किया? कितना यूज होना चाहिए फोर्स? रीजनेबल फोर्स यूज होना चाहिए. यही एक्सरसाइज, यही हम एग्जामिन करेंगे ना, यही सर्कमस्टांसेस हम एग्जामिन करेंगे. तो इफ these are the restrictions under 99, these are the restrictions. ठीक है. Is he entitled? Who is not entitled? Aggressor is not entitled. Point number 1. When will the right of private defense start? The moment the apprehension of danger starts. That is a very simple one-liner. The right of private defense starts the moment the apprehension of danger starts. And when does the right of private defense finishes? The right of private defense finishes the moment the apprehension of danger subsides. But this is only a rule with respect to body. Property ke cases mein the rules are different. I'm talking with respect to body. With respect to body, when will the right of private defense start? Moment the apprehension of danger starts. एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर का मतलब ये नहीं हुआ कि डेंजर इन्फ्लिक्ट हो जाना चाहिए. Even if the act is not inflicted, even if the offense is not inflicted, even then you can exercise your right of private defense. But provided you are able to prove that there was a reasonable apprehension of danger. So if you're able to prove that there is a reasonable apprehension of danger, same wordings have been used under section 100 clause 1, 100 clause 2, 100 clause 7. 3 क्लॉजेस में रीजनेबल एप्रीहेंशन वर्ड यूज किया है. सेक्शन 100 क्लॉज 3 to 6 में वर्ड इंटेंशन यूज किया है. हम उसकी बात करेंगे, बट एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, तभी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा. बट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म कब होगा? व्हेन विल इट एंड? द मोमेंट द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर सबसाइड्स. चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया, मैंने चोर को पकड़ लिया, या फिर चोर ने मेरा पर्स फेंक दिया. इन दैट केस मैंने पकड़कर फिर उसको पीटना शुरू कर दिया और अपना पर्स अपने पास रख लिया. कैन आई प्लीड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? और उसके बाद उसका फ्रैक्चर हो गया, उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर टूट गया. इन दैट केस आई कैन नॉट प्लीड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस even though he was a चोर, even though he was an aggressor, because my right of private defense had come to an end, because the reasonable apprehension of danger had already subsided. So it's very important that the right of private defense should be exercised within the time frame. Third is that, if there is time to take recourse to public authorities, I'm going to give you some judgments. Even if a person is staying, थाने के साथ वाला घर है उसका, बट उसके घर के अंदर चोर आ जाते हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल थाना साथ में, आपको थाने में जाना चाहिए था, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं? Even if the thana is open 24/7, पुलिस चौकी 24 घंटे खुली है, बट जरूरी नहीं है, that is not the parameter to examine that there is time to take recourse to public authorities. So if the test is that the danger has to be imminent, the test is objectivity test. The test is what a reasonable prudent man would have done in the similar circumstances if he would have faced the same circumstances. So objectivity test हम जो है apply करते हैं. Next is the force. The force that is used is, it should be reasonable force. It should be reasonable force. ठीक है ना? And reasonable force का मतलब क्या हुआ बेटा? बहुत excessive force नहीं होना चाहिए,
बट ऐसा कोई हमारे पास गोल्डन स्केल नहीं है टू वे किस चीज का कि कितना रीजनेबल फोर्स होना चाहिए. थोड़ा सा आप एक्सीड कर सकते हो, बट अगर बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया तो फिर आपका जो एक्ट है वो सेक्शन 300 एक्सेप्शंस में आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे कंप्लीट डिफेंस है, बट इफ यू एक्सीड मतलब अगर आपने रीजनेबल फोर्स की जगह एक एक्सेसिव फोर्स यूज कर लिया है, in that case, though you were not the aggressor, though there was no time to take recourse to public authorities, though you have done the act in private defense, even then you will not get the complete defense because the force that you used was not reasonable, it was excessive. In that case, your case will fall under exceptions under section 300. Did you understand? And 99 में जो मैंने अभी चीज कवर नहीं की है, that is with respect to public servants. That we will talk. Public servants. Is right of private defense available in cases of public servants? No, right of private defense is not available in case of public servants. What is the public? Who is a public servant? Section 21 IPC defines the term public servant. हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में 3 साल पहले एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया था, 6 नंबर का या 12 नंबर का. एक्सप्लेन व्हाट इज अ पब्लिक सर्वेंट. व्हाट इज द पब्लिक सर्वेंट? ठीक है, so it is just a definition which is given under IPC section 21 which defines who is a public servant. Now public servant के cases में क्या आप right of private defense exercise कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. जो आपका section 99 जो main section है that is in the favor of whom? Public servants. but उसके नीचे आपकी explanations appended है. जो explanations है they are in the favor of the individuals. They say that if the public servant does not disclose his identity and ekdam jo hai he acts in such a manner which raises a reasonable apprehension of danger, in that case even then if an individual exercises his right of private defense, he is very well within the scope. Did you understand कि अगर public servant अपनी identity disclose ही नहीं करता है, ठीक है, और वो क्या करने लग जाता है, आपका घर तोड़ने लग जाता है. पर घर क्यों तोड़ रहा है वो? क्योंकि ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, इलीगल कंस्ट्रक्शन है. बट उसको नहीं पता है. किसको नहीं पता है? ओनर को नहीं पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है. क्यों नहीं पता? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं. तो उस केस में एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर जो ओनर है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है, इन दैट केस ही इज वेरी वेल विद इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सो द एक्सप्लेनेशंस आर इन द फेवर ऑफ द इंडिविजुअल्स. But the main section 99 is in the favor of the public servant. It says that public servant, if he discloses his identity, tells that, yes, he is having a legal and an authorized orders of the, जो legal and authorized orders है कोर्ट के या फिर किसी और अथॉरिटी के, in that case, if he is doing an act which probably also may raise a reasonable apprehension, but the individual cannot exercise right of private defense. इसमें हमारे पास एक केशोराम का केस है. It is a very good authority on केशोराम versus Delhi administration. तो टैक्स लेने जाते हैं ना, जैसे काउ टैक्स होता है बेटा, राइट? काउ मिल्क टैक्स, नॉट द काउ टैक्स, मिल्क टैक्स. ठीक है, मिल्क टैक्स लेने जाता है दिस पर्सन. ही इज द इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली. Now he goes to collect milk tax, but the owner of the cow refuses to give him the milk tax. He discloses his identity, and there is a heated argument, and also आपस में there is some exchange of blows. Now this public servant sues the owner for assault and also hurt. In this case, can he plead the right of private defense? No, he cannot. अब देखो बेटा, इस केस में ना कुछ और भी, सिर्फ ये सिंपल से फैक्ट्स नहीं है. इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन इन डिटेल एंड हैज इंटरप्रेटेड फ्यू वर्ड्स ऑफ सेक्शन 99. उसके लिए हम पहले 99 को पढ़ेंगे और फिर इस केस को दोबारा से देखेंगे. ठीक है, लेट्स रीड 99. इट स्टेट्स एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. प्लीज अंडरलाइन, ऐसे एक्ट्स जिनके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो एक्सेप्शंस, रिस्ट्रिक्शंस. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt. Bracket close. एक ऐसा act which does not reasonably causes the apprehension of death or grievous hurt, आप उस केस में right of private defense exercise नहीं कर सकते. If done or attempted to be done by a public servant, but provided
See, beta, if there is also an apprehension of hurt in my case, na, if it is simple, in that case, I can exercise. But this clause 1 is subject to public servant. Public servant. ठीक है? Public servant, section 21. Acting in good faith. Good faith, section 52. IPC. Due care and caution. Due care and caution मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Public servant कैसे due care and caution? He should be aware that whatever orders he is abiding, they should be legal orders, they should be valid, right? They should be written orders. ठीक है? तो वो सारी चीजें उसको दिखाएंगी क्या कि वो good faith में काम कर रहे हैं. Under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. Put this in a circle. Though that act may not be strictly justifiable by law. That is it. Now, please, first of all, let's understand para 1. वो कहता है right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt, but it is with respect to public servant. Public servant के केस में आप right of private defense exercise नहीं कर सकते. कब नहीं कर सकते हो? If it does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt. If it is causing the reasonable apprehension of death or grievous hurt, in that case, it is available. Secondly, वो कहता है कि जो public servant है ना, he should act in good faith and he should act in good faith. ठीक है? But with respect to those acts also, ये जो justifiable may not be strictly justifiable by law. ये क्या बात कर रहा है? ये section 99 का जो para 1 है, इसने ये expression जो add कर दिया ना, कि जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है ना, दे मे नॉट बी इवन स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, फिर भी उसको प्रोटेक्शन मिल रही है. मीनिंग देयर बाय, अब जो ये केशवराम का केस है ना, इसमें जो ये इंस्पेक्टर होता है, ये इसको किस चीज के ऑर्डर होते हैं कि आप जाके टैक्स इकट्ठा कर आओ, मिल्क टैक्स. अभी जब केशवराम के पास पहुंचता है, ये वहां से उसको बोलता है कि हाँ जी आप मुझे मिल्क टैक्स दो, तो केशवराम मना कर देता है. तो अगर आपको कोई पर्सन टैक्स देने से मना कर देता है, so what is a public servant supposed to be doing? He may arrest him, or he may impose some penalty, or he may write a report. यही काम कर सकता है ना. But what did the inspector do? Inspector ने उसकी जो गाय थी ना, जो cow थी, उसी को ही seize कर दिया. He said, I'm going to seize your cow. And now they got into an argument. All right. Now this public servant, you know, when they got into an argument, I think they were also, yes, so he basically assaulted. There was no kind of hurt caused. Assault, there was just an argument. Now this public servant has filed a suit against Kesharam, pleading that, he has restricted my lawful job. मैं जो काम करने गया था, वो उसने मुझे काम करने नहीं दिया, and instead he started accusing me. He started accusing me and should be made liable. Now, in this case, should the Kesharam be made liable? Was the public servant acting in the color of his office? Here, the Supreme Court interpreted this term, may not be strictly justifiable by law. उसने क्या कहा कि बेशक जो इंस्पेक्टर है, वो इकट्ठा करने तो मिल्क टैक्स गया था, बट अगर वो उसने काऊ को सीज भी कर दिया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि वो मिल्क टैक्स नहीं दे रहा है ना. तो even if an act which is not justifiable by law, even then we are going to extend the right of private defense in cases of public servant. Hence the Kesharam was made liable and the defense was not given to him. Did you understand? So when you're going to read this judgment, here the court has interpreted may not be strictly justifiable by law. So that was clause 1. Then coming to, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. So public servant or the clerical staff of the public servant. Okay? All right. There is no right of private defense in cases where there is time to have recourse to protection of public authorities. The right of private defense in no case extends to the inflicting more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. Proportionate harm hona chahiye, reasonable harm hona chahiye. Explanation 1. Did you understand 99 has 4 paragraphs? First 2 paragraphs are talking about public servant and next 2 paragraphs are talking about
recourse to public authority and optimum use of force. And जो explanations हैं, they are in the favor of the individuals only. And वो क्या कहते हैं? It says, explanation 1 says, a person is not deprived, underline, मतलब उसको हम right of private defense दे रहे हैं, ठीक है? Not deprived of the right of private defense against an act or attempted to be done by a public servant as such, unless he knows or has reason to believe, underline, he is aware or there is reason to believe that the person doing the act is such public servant. So a public servant must show his identity. You should be aware that it is a public servant. Clause 1 is favoring the individual, who though is exercising his right of private defense against a public servant, but he does not know that he is a public servant. Why? Because the public servant has not disclosed his identity. In that case, even if you have exercised a right of private defense against a public servant, you are very well within the scope. Okay? Explanation 2, a person is not deprived, underline, not deprived of the right of private defense against an act or attempted to be done by the direction of public servant, underline, direction of the public servant, unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states, underline, states the authority under which he acts, or if he has the authority in writing, underline, writing, unless he produces such authority if demanded. So if a person who is acting under the direction of the public servant, he must state. If he has a written order, he must state or he must show the written order. आपके 4 जो है ये क्या है, ये 4 आपके restrictions हैं जो आपको section 99 में दिए गए हैं. All right. And if you have to connect this with CRPC, then yes, 37, 38 CRPC. Section 99 has to be read with 37 and 38 CRPC. Why it is important to take recourse to public authorities in case you face any kind of danger, in case you have time? Because अगर ये clause 4 नहीं होता ना 99 के अंदर, the country would have been diffused with blood. Because if you have time to take recourse to public authorities, you cannot plead the defense of private defense. Are you understanding? Okay? So that is the why. There are some things that we are going to discuss further, and then we are going to go to section 100. All right? We have to understand कि अगर ये person right of private defense exercise कर रहा है ना, और उसकी वजह से वो कोई act करता है जो कि offense होता है, वो जो offense है वो हमेशा it should not be murder. Killing नहीं, उसको killing sanction नहीं है. Any act that is done in case of right of private defense, it should be harm. Harm होना चाहिए, which is short of death. Are you understanding? It should be short of killing. Short of killing. It should only be harm, and it should be short of killing. Killing सिर्फ आपको section 100 और section 103 के जो clauses हैं, अगर वो fulfill होते हैं तो allowed है, otherwise allowed नहीं है. Otherwise allowed नहीं है. ठीक है? All right. So only thing is that, you know, whenever you are saving your body or property, you should only cause harm. Cause harm. But you may exceed the harm in case section 100 and 103 and fulfilled. अब question is कि जो ये right of private defense जब हम exercise करते हैं, जब हम ये harm cause करते हैं, और अगर section 100 and 103 fulfill नहीं होता है और फिर भी killing हो जाती है, हो सकता है ना? You have done an act which has resulted into a killing, but it is not falling under section 100. It is not falling under section 103. In that case, you have exceeded the harm. That means you have exceeded the harm. In that case, it will be covered under section 300 exception. Exception कौन सा है? 3. Right? Exception 3 of section 300. Section 300. Now this is very important. Please understand what I'm trying to say. That if a person in the exercise of his
right of private defense, in the exercise of his right of private defense, commits an act which is an offense, but he does that act of killing. Now, killing is only sanctioned if the ingredients of 100 and 103 are fulfilled. अगर वो fulfill नहीं होते हैं, in that case you can only cause harm. But if you exceed the harm and land up killing, in that case you will again not be liable for murder, but we are going to not give you a complete immunity, but we are going to give you a partial immunity. We are going to mitigate your offense from murder to exception 3 of section 300, that is culpable homicide not amounting to murder. Are you understanding? Okay, all right. Now, and the next thing that you have to remember is कि ये जो right of private defense है, ये start कब होता है? The moment the apprehension of danger starts, and when it finishes, in case of body, the moment the apprehension of danger subsides. Where are these rules given? Please look into your Bear Act. Can you see 102? This is the time. Commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences. Underline the term commences. Commences मतलब शुरू होता है. Commences as soon as the reasonable apprehension of danger. Underline reasonable apprehension of danger of the body arises from an attempt. Underline attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed. Circle it. It's जरूरी नहीं है कि offense commit होना चाहिए तभी आप अपना right of private defense exercise कर सकते हो. So if a question is, can you exercise right of private defense even if the offense is not committed? Yes, you can. How? Because if then you'll have to prove what? Reasonable apprehension of danger. Are you understanding? अब ये reasonable apprehension of danger क्या होता है? Other than, आगे देखो क्या लिखा है उसने? And it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. जब तक वो reasonable apprehension of danger continue करेगा तब तक ये भी आपका continue करेगा right of private defense. So 102 is talking about time with respect to right of private defense against body. Against body. और इसका correspondingly जो section है that is 105 with respect to property. प्रॉपर्टी के लिए कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा, उसके लिए हमारे पास 105 है. 102 जो है वो एक सिंपल सा रूल दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी. प्रॉपर्टी के लिए हम अलग अलग ऑफेंसेस का अलग अलग रूल्स हैं जो कि आपको 105 में दिए हैं. इन रिस्पेक्ट टू बॉडी, when you are exercising a right of private defense against body, there's a simple one rule formula that it will commence the moment the reasonable apprehension of danger starts and it will subside the moment the reasonable apprehension of danger subsides. अब ये क्या होता है reasonable apprehension of danger? Reasonable apprehension of danger. Now, what do you mean by reasonable apprehension of danger? See, beta, now this is very, very important. एक जगह reasonable apprehension of danger और एक जगह intention. Intention. दोनों में क्या difference है और दोनों को समझना क्यों इतना important है? Now, if you look into section 100 also, please see section 100 for a minute. It says the right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of death or to any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right of any of the description herein before enumerated, namely such an assault as may reasonably cause the apprehension. Please underline reasonably cause the apprehension. Pick second clause dekho, assault as may reasonably cause the apprehension. Underline reasonably cause the apprehension. Thirdly, an assault with the intention. Underline intention. First clause, second clause, seventh clause of section 100 talks about reasonable apprehension. Clause 3, clause 4, clause 5, clause 6 talks about intention. What is the difference? क्यों यहाँ पे देखो, legislature could have used that the right of private defense of body extends in the following cases to the causing of death
if there is a reasonable apprehension that death will be the consequence. And third clause में भी लिख सकते थे ना, reasonable apprehension that intention, reasonable apprehension of rape, या फिर reasonable apprehension of gratifying unnatural lust. There has to be some difference. Okay, all right. Now the difference is with respect to BOP, burden of proof. Now what is burden of proof? अब देखो बेटा, let's say there's this A, all right, who was at his home and a burglar enters into his house. Now, या फिर theft की जगह, and there's a burglar who enters into his house and probably takes out his knife and is approaching towards A. ठीक है? Now, when he is coming towards A, तो अभी A को क्या प्रूव करना है? इसको क्या? अब जब B एक चाकू के साथ A के सामने आ रहा है, तो there is what? A reasonable apprehension of danger. वो apprehension of danger किसको लग रहा है? Who can apprehend that there is danger to my life? A. Are you understanding? He can apprehend. BOP कितना है? सिर्फ किसका state of mind हमें प्रूव करना है? इसका state of mind. क्या इसको क्या प्रूव करना है? कि जब एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन के सामने कोई चाकू लेकर जोर से चलाते हुए आएगा, तो देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि ही इज कमिंग टू किल हिम. कोई डंडा हॉकी स्टिक लेकर आएगा, देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा. तो वहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन और द अक्यूज्ड हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस in his self-defense under any of the clauses or with a reasonable apprehension, in that case, he will only have to prove reasonable apprehension with respect to his state of mind. तो यहां पर भी 102 क्या कहता है कि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा जब आप कोर्ट में क्या प्रूव कर सकते हो कि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे था ना, वो कैसे था कि कोई भी एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन एप्रीहेंड करता कि देयर इज अ डेंजर, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. डिड यू अंडरस्टैंड रीजनेबल एप्रीहेंशन? व्हेन आई हैव टू प्रूव इंटेंशन क्या? इट सेज एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप. An assault with the intention of committing rape. Now, let's say A is a girl and B comes to her house. ठीक है ना? All right. अब यहां पर ना हमें इसका स्टेट ऑफ माइंड तो प्रूव करना ही करना है कि इसको, there was a reasonable apprehension. But apart from that, we have to prove that this fellow, that is the victim, that he had the intention, desire to commit an act which would qualify section 100. So यहाँ पे जब भी हम intention word यूज करते हैं ना, तो हमें किसका state of mind प्रूव करना है? Victim का state of mind, not the accused. That the person committed an assault. He committed an assault on A, but he committed an assault on A how? With the intention to commit rape. So intention to commit rape में आपको समझ में आ रहा है? The burden of proof is more strict, more heavier. Why? Because here we have to prove, एक तो हमें इसका state of mind भी prove करना है और हमें इसका state of mind भी prove करना है. Is everybody following? ठीक है? All right. So in section 100 का जो थर्ड क्लॉज है, फोर्थ क्लॉज है, फिफ्थ क्लॉज है और सिक्स्थ क्लॉज है. सेक्शन 100 का थर्ड से लेके सिक्स्थ क्लॉज तक the burden of proof is strict because the legislature has used the term intention. Whereas in clause 1, clause 2 and clause 7, only the term used is reasonable apprehension. So when the term used is reasonable apprehension, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको किसका
स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करना है, अक्यूज्ड का स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करना है, विक्टिम का स्टेट ऑफ माइंड प्रूव नहीं करने की जरूरत।